Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today I am excited to show you my process for creating a stunning charcoal and graphite portrait. I will walk you through each step from sketching to adding intricate details. So let's dive right in. Before we begin, it's essential to select the right reference photo. कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने से पहले सही रेफरेंस फ़ोटो सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एंड द फोटो of Vikas sir that I have chosen truly captures Vikas sir's charismatic expression and will serve as our guide throughout the drawing process. जो रेफरेंस फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया है विकास सर का वो काफ़ी ही कैरिस्मेटिक है और हमारी पूरी ड्राइंग प्रोसेस में हमें गाइड की तरह हेल्प करेगा. We will start by sketching the basic outline of Vikas sir's face and try to pay attention to the proportions and position of the facial features. Good foundation is crucial for achieving a realistic likeness.
Next, I'll add depth and contrast to the portrait using charcoal pencil and charcoal powder. The charcoal powder will help us create those rich dark tones in facial features. Blending is a crucial technique in charcoal drawing. It softens the harsh lines and create a more realistic appearance. I will take my time with this step to achieve the desired effect. आप भी अपना वक्त लीजिए ब्लेंडिंग करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्ट्रेट ड्राइंग में. तो आप भी अपना पूरा समय लेके आराम से ब्लेंडिंग प्रोसेस को पूरा कीजिए. Now here I am adding details using a charcoal pencil. The combination of charcoal and graphite allows us to achieve a wide range of tones and textures in the artwork. As with any art piece, refinement is key. Take the time to review your work and make any necessary improvements you want to make. Pay a close attention to capturing
the unique features and characteristics of your portrait. And there it is, a beautiful charcoal and graphite portrait of Vikas Divyakirti sir. I am delighted with how it turned out, and I hope you are too. मुझे पसंद आई है जैसे भी ये निकल के आया है मेरा पोर्ट्रेट, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी. Thank you for joining me on this artistic journey. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more inspiring art content. And of course, don't forget to check out Vikas sir's channel if you are a UPSC aspirant. अगर आप कोई एक UPSC aspirant है तो प्लीज़ विकास सर का चैनल देखना मत भूलिएगा. दृष्टि IAS आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. And until next time, stay safe, stay healthy, keep creating, and of course, remember every stroke brings us closer to becoming a better artist. हर स्ट्रोक हमें एक बेहतर कलाकार बनने के और करीब ले जाता है. हमेशा ध्यान में रखिएगा. And happy drawing. Hope you enjoy it.